So with your permission, we start the proceedings of the webinar on COVID-19, the legal impact. Our focus will be the state of Uttar Pradesh, which has taken the lead so far as management of COVID is concerned. Just in the morning today, I was reading in the newspapers that the UP government has announced a scheme for providing employment to 1 crore persons, you see. And I think that is a very unique and creditable step which will help the labor class, the employees working in a very big way. So I congratulate, you see, the UP government and the Honorable Minister, Shri Brajesh Pathak ji. The in this seminar, webinar, we are having representatives actually only from the state of Uttar Pradesh, with one exception, and that exception is myself. I am in Delhi. All other participants, of course, the Honorable Minister, Justice Amarnath Verma, Justice Devi Prasad Singh, Mr. Anurag Gupta, Mr. Vijay Bahadur Singh, Ms. Radhika Gupta, Mr. Mukul Shah, and Mr. Mukesh Singh, they are all in the state of Uttar Pradesh. So it is a very befitting and most representative participation by those who are going to address us today in this webinar. Now, COVID-19, the legal impact can be felt in so many ways, in so many activities, in so many spheres. चाहे वो बिजनेस हो या कॉमर्स हो या ट्रेड हो या एमएसएमईज के इश्यूज हों, लेबर के इश्यूज हों और प्रोफेशनल्स के इश्यूज हों, लॉयर्स के, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, या इश्यूज हों जनरल पब्लिक के अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि आजकल कोर्ट सिस्टम कैसे चल रहे हैं, ये सब इश्यूज के लिए हमारे पास हैं representatives who will speak on different aspects of impact of COVID-19 on various activities. We have a very distinguished panel. We have Mr. Shri Brajesh Pathak ji. He is currently the Minister of Legislative, Justice, Rural Engineering Service. And earlier, he was holding also the position of Law and Justice with additional charge of energy resources and political pension in the government of the Uttar Pradesh. Shri Pathak was also a member of Parliament, having been elected to the Lok Sabha from Unnao constituency in the year 2004, and he held that position as member parliament till 2009. And then recently in the 17th Legislative Assembly elections in the state of Uttar Pradesh, he fought from the very prestigious constituency of Lucknow Central Assembly and won the election with a huge margin. So it's a pleasure, privilege, sir, to have you. So Brajesh Pathak ji, most hearty welcome आपको. आपका बहुत हम आभारी हैं कि आप इसमें हमारे साथ participate कर रहे हैं. And we have Honorable Justice Devi Prasad Singh, who will be speaking because of his experience in the field of judiciary as to what is the impact of COVID so far as the administration of justice is concerned. He was a brilliant lawyer, and then he joined the bench, was elevated as a judge of the High Court in the year 2003.
1903, and he had started his law practice way back in 1976, and he held the position as a judge with great distinction, and now he is, of course, leading a very fruitful retired life. So welcome to you, Honorable Devi Prasad Singh Ji. Welcome. So we also have the distinguished presence of Justice Amarnath Verma. He's from Lucknow and belongs to a family of lawyers and judges. And he started his practice way back in 1975 and became and was elevated as a judge in the year 2002. And even thereafter, he held various positions, also as a member of the member judicial of the Armed Forces Tribunal. So a hearty welcome to Honorable Justice Verma. Mr. Vijay Bahadur Singh is a colleague from the profession, and it's a pleasure for me to welcome him. He has held the position as Advocate General of the state of Uttar Pradesh, but he's also had some political role to play. And in 2009, he was elected to the Lok Sabha from Hamirpur with a great majority of votes of nearly 26,000. And he's a member also of the UP Bar Council and has visited many countries, including France, Japan, Nepal, Sweden, Thailand, USA, UK, and Gulf countries. So we welcome Mr. Vijay Bahadur Singh to this webinar. Then we have a very young practicing lawyer, a lawyer who has put in only 6 years in the profession, but she was selected for this webinar for the reason that she would give views as a practitioner of law before the High Court and also before the tribunals such as the National Company Law Tribunal and the Insolvency. And she's Radhika Gupta. She graduated law in 2014 and has been practicing for the last 6 years in various courts. She is also at this young age a guest lecturer in the famous college, Jesus and Mary College in Delhi University. She has participated in various international events, including the BRICS Legal Talent Program in Russia, and represented India as a speaker in the round table on the alternate dispute resolution in BRICS countries. She participated in the year 2016 in second South Asia Legal Forum held in Kunming in China, and did a course with the Harvard University in the year 2013. It's an online course. In 2012, she participated in the Inter-Pacific Bar Association meeting, and but most importantly, even while she was a student, she authored a book titled Constitutional Law, published by LexisNexis in the year 2013, and has authored other research papers. So we welcome the young lawyer Radhika Gupta to this webinar, and we have from Agra Mr. Anurag Gupta, who is consultant advocate, lawyer and attorney with 32 years of practice. He is a member of the Governing Council of the Bar Association of India and is also an active participant in various chambers of commerce and arbitration institutions. He's got a large number of publications to his credit, and he has participated in various domestic and international events pertaining to law. So welcome to you,
Mr. Anurag Gupta, and we have Mr. Mukul Kumar Shah. He represents the industry and also the profession, in the sense he's a chartered accountant. Uh, he started his uh, articleship, and then at the moment he's a chartered accountant in the firm Shah Mukul Kumar and Associate, and he's also a qualified cost accountant, which he completed the course in the year 1990. And very importantly, he is married to Professor Dr. Kavita Shah, presently research and teaching faculty in the Institute of Environment and Sustainable Development, and has a very loving family. So we welcome you, Mr. Mukul Shah. We also have Mr. Uh, Mukesh uh, Mukesh Bahadur Singh. He's heading our Lucknow chapter, and he's been very active in promoting the Indo-American Chamber of Commerce in the state of Uttar Pradesh. The idea of having this webinar with focus on Uttar Pradesh is also that the Chief Minister of Uttar Pradesh about 2 months ago said that he would welcome investments in Uttar Pradesh from the United States. That is where we thought that we could work with the government of Uttar Pradesh and try to have the US companies who are members of the Indo-American Chamber to make investments in the state of Uttar Pradesh because of so many amenities, facilities, privileges, and benefits, those which have been offered by and incentives which have been offered by the state of Uttar Pradesh. So, with these few opening remarks, I now request Mr. Mukul Shah, who is past chairman of Indo-American Chamber of Commerce Varanasi branch, to give his formal welcome address. Mr. Mukul Shah. Thank you, sir. Good afternoon. Am I audible? Yes. 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 On behalf of IACC UP Varanasi branch, it is my proud privilege to welcome Honorable Minister Shri Brajesh Pathak ji, eminent jurists, very learned panelist speakers, members of IACC, other participants in this webinar on COVID-19 legal aspects and legal impacts. This COVID pandemic has impacted all and sundry in all walks of life, particularly in business life. Nobody has been left untouched. As a practicing chartered accountant, it worries me as to how it will impact contracts like supply of goods and services, road construction, power purchase agreements, payment of wages, etc. In India, enforcement of contract is tough. If something wrong happens, parties try to settle it mutually for obvious reasons. Because of the commercial disputes are restricted to very large cases, something very serious has gone wrong. The words force majeure has become buzzword. Section 31, 32, 56 and 65 of Indian Contract Act 1871 is being widely discussed. We hope in this webinar, where we are discussing wide subjects like Contract Act, Companies Act, IBC, etc., we will have some fruitful discussion. Please carry on. Please carry on the session, please. Yeah. Okay. Thank you, Mr. Mukul Shah. Now I request our young lawyer participant, Ms. Radhika Gupta, to please make her brief presentation. And I would request
all the worthy speakers to please confine to the time limits which are indicated in the program circulated, because we do want to listen to the Honorable Minister and also to have some questions and answer session. So over to you, Radhika. Good afternoon, Honorable Minister, Dr. Bhasin, the eminent panelists, and all the participants. Um, Today, I'm going to speak on the insolvency and bankruptcy code and the effect that COVID-19, this pandemic, has had on the businesses. So on March 24th, when the lockdown took place of the country, it was not just the country that came under the lockdown, even the insolvency and bankruptcy code came under a lockdown. So the insolvency and bankruptcy code was enacted basically to provide and revamp the framework for insolvency resolution in India in a time-bound manner, and for promotion of entrepreneurship and balancing different interests of the various stakeholders involved in the business. However, on March 24th, due to the given situation of the pandemic, it ensured the closure of majority of the businesses and commercial establishments, barring a few essential services. As a result of this countrywide lockdown, the businesses and especially the micro, small and medium enterprises face the imminent threat of going out of business. To curtail this panic among the business, the government took certain measures to cushion the companies so that they do not result in a closure. I would like to briefly discuss the steps that came about as a result of the notifications and the measures in terms of the ordinance that have been taken. So firstly, the notification came out whereby they increased the limit. The threshold limit initially was rupees 1 lakh for filing a case before the National Company Law Tribunal. It was increased to 1 crore, which was the maximum threshold that could be given by the notification. The purpose was that more and more creditors do not come to the National Company Law Tribunal for the grievance, as the situation was such that people would not be able to make payments. Also, another notification came out whereby a section was incorporated, and that provided time, that basically increased the time period of completing the insolvency resolution process. So as per the insolvency and bankruptcy code, 330 days is the maximum period which is given for providing resolution to the company. However, in view of the pandemic, they have excluded this time period where the country has been under the lockdown to revive the company. My opinion is that, of course, it is the need of the hour that the time period that is going on of the pandemic, they cannot take steps in terms of making of payment and making resolution of the company. However, it is important that with the technology today, it should not be a complete this thing that the IRPs that are working for reviving the company completely stop their work. Because with the technology, they can always conduct the COC meetings from the place where they are sitting. They don't have to conduct meetings by meeting at a common place. So therefore, I think that the government should take steps to not completely shut down the revival procedure, because the economy is as it is going on a downturn. Thereafter, the most important ordinance that came across was issued on June 3rd. This was effective with effect from 24th March. The new rules
came into effect on June 5th. The purpose of bringing the ordinance was that the pandemic had impacted the business, financial markets, and economy all over the world. And there was complete uncertainty and stress on the business. So therefore, there was a need to suspend Section 7, 9, and 10 of the Insolvency and Bankruptcy Code. Therefore, the ordinance inserted provision 10A, and as per that, any default which arises on or after 25th of March 2020, that cannot come before National Company Law Tribunal. In my opinion, it was the need of the hour, because the companies are not functioning today, and therefore it would not be possible for them to run in the normal functioning that they are usually into. So therefore, I would, in my opinion, point out a few positive impacts that the amendment has brought about. Of course, the government has taken the best measures it could, but this particular ordinance, I feel, is in the larger interest of the business, because they are not in a position to function normally. And it is also important for me to point out that all the defaults that had occurred prior to 25th March 2020, they still can be filed before the National Company Law Tribunal. They are not barred by the insertion of Section 10A in the Insolvency and Bankruptcy Code. Also, the proviso included under Section 10A has been subject to a lot of opinions, because it states that no application shall ever be filed. So there has been an opinion that any default that occurs during the period which has been included in the amendment, that is 6 months, which can be increased to a maximum 1 year by the government, that no application can be filed for such defaults. According to me, that is not the correct position. Of course, there would be litigation probably before the courts in that regard. But if the default continues even beyond the period of the notified period, thereafter, the companies, the creditors, operational and financial, both can approach the NCLT for the default. Also, it will help the companies under distress to be able to revive themselves. As we know, the real estate market, even prior to the pandemic, had been affected. And given the situation, it has now not been possible to resume construction for a very long time. And therefore, these amendments will help them, that they do not lead to a situation where these days a lot of real estate companies are coming to a closure because they are not in a position to give out flats and make the payments back to the financial institutions. Also, in respect of the micro and small and medium companies, I think there is going to be a negative aspect, in the sense that they are mostly the operational creditors, and they would not be able to approach the National Company Law Tribunal for a very long time due to the notified period. And even in the case where the amount is, if it is continued to be 1 crore, they would not be able to file, because the operational creditors are usually with a much smaller amount. However, I feel that in the times of this unprecedented downturn being experienced on account of the COVID, these measures which have been taken by the government, as well as through the amendment and the ordinance in the Insolvency and Bankruptcy Code, would actually be beneficial for the resurrection of the enterprises who are facing the heat at this hour. Because after all, the objective of IBC coming into being was to ensure that the corporate debtor keeps on going and as a going concern, and is revived in case they face such problems. Okay. Thank you. Yes.
I can speak. Yes. Yeah. Thank you. Thank you, Radhika. That was a very good presentation, Thank you. highlighting, you see, the impact of COVID on business and particularly with regard to the insolvency code. And you also highlighted the impact on MSMEs and also the steps which the government is taking. So thanks a lot for that brilliant presentation. And now we, from Noida, that is Radhika Gupta, we move on to Agra, and we have Mr. Anurag Gupta. Although he is based in Agra, but his practice is all over, not just in state of Uttar Pradesh, but he's a frequent visitor to New Delhi also. And I've already introduced Mr. Gupta, so please, I request you to make your presentation, Mr. Anurag Gupta. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon. It's a pleasure having to see all you people on this place, and it's my pleasure, sir. I'm honored. Sir, I have been asked to say what is the perspective and the effect of COVID-19 on the industry. To be in a very short word, I would like to say that it is disastrous. And what we have to do now to revive the industry is to give liberties and discounts to the industry. They have to be in enormous criteria and in phenomenal aspects. ये नहीं कहा जा सकता कि भाई हम लिबर्टी नहीं देंगे बट बिजनेस शुरू हो जाए. प्रोस्पेक्टिव में आपको उन्हें सब तरीके की लिबर्टीज देनी पड़ेंगी, डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे, बेनिफिट्स देने पड़ेंगे to make them enable to start their work again, because currently all the workers have left their workplace. So there is nothing with the employer or the factory owner to start their work. So liberties, discounts, facilities, tax relaxations and facilities will have to be provided. Mr. Bhasin, you can carry it out, sir. Hello. Your internet is closed. Sir. Internet. Sir, I'll just look into it again. It's probably the break. Yeah, it is fine now. So you can carry on, Mr. Gupta. Sir, I'm not able to see. I'm not able to converse. No, we can hear you and see you also. We can hear you. Sir, आप कैरी करें, मैं बीच में आ जाऊंगा. No, we can hear you. No problem. We can hear you, yes, and see you also. So just a second. I'll just call my son. बेटा जरा ऊपर आ जाओ, कनेक्टिविटी खत्म हो गई इसकी. अच्छा तो आवाज आ रही. ठीक है, तो we move forward and we'll come back to you, Mr. Anurag Gupta. Sir. Okay, now due to these technical glitches, we have not been able to hear good views, but I think we will get an opportunity again. Meanwhile, I'll request one of the most eminent lawyers, Mr. Vijay Bahadur Singh, senior advocate, has been a member of parliament and has also been Advocate General of the state of Uttar Pradesh. So over to you, Mr. Vijay Bahadur Singh. कहाँ चला गया बत्ती? मैंने क्या दबाया? मैंने कुछ नहीं दबाया. कोई प्रॉब्लम
दूसरे पे आ गए, विजय बहादुर सिंह। Mr. Vijay Bahadur Singh is on mute. Yeah. He needs to unmute him. Please unmute. He can't hear me. Mr. Vijay Bahadur Singh, unmute. He can hear you. Please Yes. unmute. Yes. No, unmute, unmute. Unmute. अरे भाई साहब वहाँ अनम्यूट कर दीजिए। Unmute. अरे अपने असिस्टेंट कहीं अनम्यूट कर दे, आवाज नहीं जा रही। हाँ बताइए। हाँ ठीक आ गया। We can hear you. आप ठीक है? Yes. हाँ ठीक है, राइट। अब ठीक है, प्लीज कैरी ऑन। देखिए टॉपिक, अगर हम लोग सीरियस लीगल डिस्कशन में जाते हैं तो ये डिबेट बड़ा बोरिंग हो जाएगा। इंट्रिकीज ऑफ लॉज क्या, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि पैनलिस्ट के बारे में जो कोविड-19 है इसका अब क्या इफेक्ट है और उसका मैनेजमेंट लॉ के जरिए क्या हो सकता है। जैसे अभी आगरा के स्पीकर साहब बता रहे थे कि इसका इंडस्ट्री में क्या इफेक्ट करता है। देखिए अगर इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाइए तो 22 मार्च को सबसे पहले 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान में एक दिन 24 आवर्स बंद हुआ और 24 मार्च से नेशन वाइड हम लोगों ने बहुत सफल, अगर कहा जाए तो नेशनल लेवल पे इसको 100% सक्सेसफुल बंद रहा और ये चला करीब 17 मई तक। इस दौरान में हमारी 130 करोड़ जनता ने 101% कोऑपरेशन किया। अगर लॉ की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अधिकारों से इसका मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया। अब सबसे पहले जिसको हम लोग एक भूलवश या चाहे जो कहा जाए माइग्रेंट लेबर का सवाल आया। इतना तो मैं पार्लियामेंट में रहा 5 साल। हमारे उत्तर प्रदेश के लॉ मिनिस्टर ऑनरेबल ब्रजेश पाठक जी हमारे कोलीग रहे हैं। ये राज्यसभा के भी मेंबर थे, लोकसभा के भी मेंबर थे। वो स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिशियन थे। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी थे वसीम साहब। हमें याद है का प्रॉब्लम को हम अंदाज नहीं कर पाए। उसका कारण यह था कि बंबई, अहमदाबाद, नोएडा, जहां जहां हैदराबाद, बेंगलुरु में जहां एक काम कर रहे थे, इनके एम्प्लॉयर ने इनसे टोटल गुड बाय कर दिया। तो एक ऐसी समस्या जिसको ह्यूमन प्रॉब्लम आई, इनके खाने पीने और रहने की समस्या आई। इसी समय मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश, खासकर हमारे योगी जो इस समय जो तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले राजस्थान में लाखों बच्चे इलाहाबाद के और यूपी के सब जगह के वहां पढ़ने और जाते हैं, कंपटीशन में तैयारी करते। उन बच्चों को बसेस भेज करके निकाल के ले आए। कुछ स्टेट ने इसका विरोध भी किया, लेकिन जो इस तरह से लॉ डेवलप हुआ है भसीन साहब, मैं उसके डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं कि वो फोरम एप्रिसिएशन नहीं होगा। फंडामेंटल राइट्स के अबव आजकल ह्यूमन राइट, जो ह्यूमन राइट्स हैं दे आर मच अबव। तो ह्यूमैनिटीज को देखते हुए उन बच्चों को हम लोग ले आए। इसी बीच में जब मजदूर तड़प गए तो पैदल चलने लगे। हमारे उत्तर प्रदेश में पहला स्टेट है जिनको पूरी तरह से सुविधा दी गई। बस से कहा गया, ट्रेन से कहा गया और दुनिया भर की बातें हुई।
आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी मूव होता है, अगर पानी बरसे या ना बरसे, दोनों में पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन ये सब लोगों ने देखा और सराहा और अप्रिशिएट किया कि उत्तर प्रदेश ने ये लीड लिया कि माइग्रेंट लेबर का जो बड़ा सीरियस इशू था, बड़े मुस्तैदी से, बड़ी अच्छी तरह संभाला। अब इसमें लीगल इम्पैक्ट देखिए। लॉ यहां प्रोटेक्शन दे रहा है कि इन माइग्रेंट लेबर जो वहां काम पे नहीं जा रहे हैं, इनको लॉ प्रोटेक्शन दे रहा है। इनको कोई डिसमिस नहीं कर सकता, इनको कोई टर्मिनेट नहीं कर रहा है, और इनकी सैलरी का भी इशू उसी तरह बरकरार है। दिस इज द लॉ which takes the gap in between political outfit and the legal field. और ये इम्पैक्ट बहुत अच्छी तरह है। इसी समय में I would like to appreciate that central leadership भी, including our honorable Prime Minister, has announced huge financial packages. 90 लाख करोड़ का पैकेज दिया। Every day, the finance minister, Madam Sitaraman, is giving some concession this way or that way. तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये जो डेवलपमेंट और ये पैकेजेस दे रहे हैं अंडर द लीगल कवर है, कोई प्राइवेट एंटरप्राइज तो है नहीं। अब ये जो असली चीज आ रही है कि इस सब चीज को कैसे एक लीगल कवरिंग दिया जाए या कानूनी जामा पहनाया जाए। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा संविधान की बात हम लेमैन वाली डिस्कस कर रहे हैं जिससे सब लोग समझ जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, वसीम साहब आप बहुत जानते हैं, आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। लेकिन आर्टिकल 19 को भी अगर पूछा जाए तो ओवर राइट करता है आर्टिकल 21, राइट टू लिव। उस राइट टू लिव के आधार पर कानून बनाए गए, जैसा भसीन साहब आपने ओपनिंग एड्रेस में किया कि 1 करोड़ माइग्रेंट लेबर को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक पैकेज दिया। लेकिन ये 1 करोड़ तक नहीं है। उनका कहना है कि जो भी यूपी में वापस आए हैं, चाहे 1 करोड़ हो चाहे 2 करोड़ हो, सबको उनको सुरक्षा, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन का मदद किया जाए। और अगर मैं गांव की कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर देता हूं, एक बड़ी भारी लहर चल रही है वहां, और क्या उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरह लेबर्स को काम दिया जा रहा है और उनको किसी तरह की बाय लीगल कवर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस नहीं होने वाली। अब इसी में आपने देखा होगा कि बहुत से अस्पताल जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, जो कोविड-19 के या पॉजिटिव केसेस आते थे, उनका ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे, उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं। कानून के द्वारा उनको डायरेक्शन इश्यू हुए, मैनेजमेंट हुआ, और उसको उन्होंने एक अमली जामा पहनाने की कोशिश किया। हियर द लॉ टेक्स लीड इन मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको पॉलिटिकल ना माना जाए तो कोविड-19 इंडिया की देन तो है नहीं। ये तो हमको अभिशाप कहा जाए या श्राप कहा जाए, ये तो हमारे पड़ोसी देश से आई। और जैसा कि कहा जाता है, वहां ह्यूमन ट्रीटमेंट तो नहीं मिला जिन्होंने कोविड सफर किया है। और क्या कहा, अगर उस चीज की जिक्र किया जाए तो आउट ऑफ सब्जेक्ट जाएगा। लेकिन हम लोगों ने इस ट्रीटमेंट को ह्यूमन ट्रीटमेंट विथ लॉ देने की कोशिश किया। यहां तक कि एक स्टेट ऑफ हमारी पड़ोसी स्टेट थी, वहां अपोजिशन हो रहा था कि नहीं, हम वापस नहीं लेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज किया, गुड सेंस प्रिवेल, और ह्यूमन एंगल से उन्होंने भी अपने जो काम बंबई इत्यादि में कर रहे थे उनको किया। मेरा कहना यह है कि अगर इस ड्रामेटिक चेंज में हमारा लीगल एस्पेक्ट बहुत है,
जैसे अभी हमारे लायक दोस्त कह रहे थे कंपनी लॉ में ये किया जाए वो, कंपनी लॉ तो सेकेंडरी स्टेज है। पहले वो नौबत तो आए कि जो इंडस्ट्रियल लेबर बंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली या और इंडस्ट्रियल बेल्ट से जो गांव में हम यहाँ उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, वो कितने लेबर ऐसे होंगे जो वहां जाएं। अब यहां पर एक इंडस्ट्रियल गैप आना चाहिए, यहां पर एक इंडस्ट्रियल गैप आना चाहिए जिससे लॉ उनको जाने में या वर्क रिज्यूम करने में मदद करे। जैसे मैं उदाहरण कर रहा हूं, हमारे छोटे से गांव में जो उत्तर प्रदेश में बांदा और हमीरपुर के बीच में है, करीब 18-20 लेबर आए। अगर ये मन बनाते हैं कि वापस बंबई जाना चाह रहे हैं और उन्होंने 10-10 साल, 15-15 साल वहां वर्क किया है और वहां के फैक्ट्री मालिक ने उनकी जगह किसी और को वर्क में ले लिया है, तो हमारे ख्याल से दिस इज द टाइम जहां भसीन साहब आप मदद करिए, भारत सरकार के कानून विभाग को ध्यान दिए कि उनको अगर वो रिज्यूम करते ड्यूटी तो उनको प्राइमेसी और प्रायोरिटी दिया जाए, और उनकी जगह अगर कोई आ गया है तो इनको एकोमोडेट किया जाए, उनको कहीं और एडजस्ट किया जाए। These are the aspect वहां पर we are required to help. For example, आजकल एक बड़ी भारी बात यह है, जो प्योर लीगल बात बता रहा हूं, अगर जैसे मुझे कोई कह दे कि पॉजिटिव हो गए तो पूरे एरिया में जहां मैं रहता हूं सिविल लाइंस में तहलका मच जाएगा। जैसे हमने कोई मर्डर कर दिया या हम HIV अफेक्टेड इंडिविजुअल हो गए, तो एक प्राइवेसी का भी इश्यू आता है। जैसा कि आपने देखा कि अभी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सैकड़ों पेज का पुट्टू स्वामी का जजमेंट दिया, प्राइवेसी मेंटेन करना पड़ेगी, और जो हमारे डिस्क्लोजर्स आए हैं उसको पब्लिक छू न जाने जाए। इस सब चीजों को अब वर्क बहुत सीरियस हो गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, मैं फिर वसील साहब आपसे बताऊंगा कि इंडस्ट्रियल लॉ में, इंडस्ट्रियल लॉ सेंट्रल 1947 का है, यूपी इंडस्ट्रियल लॉ 1947 का है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है। अब इंडस्ट्रियल लॉ में अब किसी की डिमांड नहीं है और उसको अगर क्लोजर करना है तो गवर्नमेंट ऑफ लेबर डिपार्टमेंट से लेबर कमिश्नर की परमिशन लीजिए। लेबर कमिश्नर की परमिशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस सब रिडंडेंट, आउटडेटेड 1947 के जो लॉज हैं, जब लेफ्टिस्ट धारा उत्तर प्रदेश में पूरे देश में बह रही थी, उसको चेंज करना पड़ेगा। ये काम आप लोगों का है, जो आप दिल्ली में इतने लीगल एक्सपर्ट इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं कि जितने, अब जैसे बोनस एक्ट है उसमें आपको 7.9%, 9.7% आपको देना ही पड़ेगा, चाहे उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट हो तो ना हो, तो फिर वो बैंक्रप्सी एक्ट में तो आ ही जाएगा। तो इस वैक्यूम को नए सिनेरियो में आपको फिल अप द गैप करना पड़ेगा। मेरा अंत में ये भी इशू हुआ कि इसको जब इशू आए तो इसमें बड़ा टाइट रोप वॉकिंग है, और उसमें कोई रेसिज्म ना आए, कोई कास्टिज्म ना आए, और एक ह्यूमन एंगल से अगर हम इसको डेवलप करते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान में सैकड़ों लोगों ने पूरे भरसक के सहयोग दिया। पीएम केयर में फंड आया, हमारे यहाँ रुपए पैसे की शॉर्टेज नहीं है। सिर्फ अगर प्रॉब्लम है तो उसका इफेक्टिव मैकेनिज्म को इन्वेंट करने के लिए उस पे मैं चाहूंगा कि कम से कम जो सीनियर फ्रेटर्निटी ऑफ लॉयर्स हैं, जैसे भसी साहब आप हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हैं, वो सिर्फ फाइनेंशियल एंगल में सुप्रीम कोर्ट मेहनत ना करें, एक नया लीगल स्ट्रक्चर पैदा करें जिससे एक इफेक्टिव डेवलपमेंट हो, और ये
एक आफ्टर द कोविड एरा में हमारा डेवलपमेंट हो, ये मेरा कहना। लास्टली मैं ये कहना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी अलाइव, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को उतना ही जोर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एंड इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी उसी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, उनके लॉज बनाना पड़ेंगे, उनको इम्प्लीमेंटेशन का, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करते समय ह्यूमन एंगल होना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई रास्ते में निकल गया तो पुलिस वाले डंडा ठोक ठोक के उसको बिछा दें। इसका ह्यूमन एंगल से अगर हम आप लोग इसको चलते हैं तो आई डोंट थिंक ये प्रॉब्लम। तीसरी बात, अभी अखबार में आया कि भारत के एक बहुत प्रसिद्ध आयुर्वेदिक वाले ने कोविड की दवाई निकाल दिया। अब उससे पूरे इंडिया में तहलका मच रहा कि ये गलत है, ये नहीं। अरे आप उसकी जो दवाई है उसको ठीक से टेस्ट कराइए, उसको अगर वो दवा इफेक्टिव है तो उसको चलाने में क्या नुकसान, और अगर इफेक्टिव नहीं है तो उसका कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन, पेनल एक्शन जो सकता हो वो कर लिए। लेकिन किसी के अटेम्प्ट को आउटराइट बिना एग्जामिन करके उड़ा देना, और ये जो जब से ये फेक न्यूज, व्हाट्सएप, ये जो एक नया ये अगर पूछा जाए तो कोविड वायरस से कम नहीं है ये। इससे हमारे डेवलपमेंट में बहुत तगड़ा ब्रेक लगता है। तो इसको, और इस पे कोई लॉ नहीं ठीक करेगा, इसको हम लोग जितने सब पढ़े लिखे और जो नागरिक हैं उसको देखना चाहिए, उसको रुकवाना चाहिए। इसमें प्रेस की भी बड़ी भारी जिम्मेदारी। इन सब को देखते हुए एक बार पुनः हमारे मुकेश बहादुर सिंह जो उत्तर प्रदेश से यंग एंटरप्रेन्योर हैं, और उनको ऐसे कार्य के लिए मैं बहुत ज्यादा अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और फिर मैं जब अभी क्वेश्चन आंसर आएगा तो बाकी चीज जो मैं बताना चाहता हूं फिर बताऊंगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू विजय बहादुर सिंह जी। वेरी ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन जो आपने टच अपॉन किया ऑन द ह्यूमन एंगल, ह्यूमन ट्रीटमेंट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और वो जो आपने आर्टिकल 21 का मेंशन किया विद इन रिलेशन टू जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, माइग्रेंट लोग हैं, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने कितना कुछ किया, आई थिंक वो तो बहुत ही सराहनीय है। पर इसमें और भी बहुत एफर्ट चाहिए। और आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अब जो वो लोग अब वापस काम पे अगर आना चाहते हैं तो उसके लिए कोई कानून होना चाहिए ताकि उनको जॉब सिक्योरिटी रहे। और जॉब सिक्योरिटी का मतलब है कि वो आए, वापस अपना काम ज्वाइन करें, पर जिसकी जो इनकी जगह पे काम कर रहा है उसको रिमूव नहीं करना चाहिए, उसको कहीं और एकोमोडेट करना चाहिए। तो ये ह्यूमन एंगल जो आपने बताया है बहुत ही अच्छा है, और ये आई थिंक वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। So now, friends, we move on to the administrators and dispensers of justice. So I'm requesting our guest of honor, Honorable Justice Amarnath Verma ji, former judge of the Allahabad High Court, to make his presentation. Shri Amarnath Verma ji. Sir, please unmute your mic first. So the minister sir की meeting हो रही है, so we'll ask minister sir to just give his speech. Minister sir has to go at 5. So can we ask minister sir to speak for 10 minutes and then? Abhi. हाँ जी sir. Yeah, can you hear me, everyone? Yes sir. Justice Verma, can you please unmute your mic? Sir आप बोलिए. Yeah, you see, the Honorable Minister has to leave for a very important, urgent meeting, and I've just got a message. So I am requesting him to make his presentation, his address to us as our chief guest to speak in today's webinar.
So I request Shri Brajesh Pathak ji, Honorable Minister, Legislative Justice, Rural Engineering, State of Uttar Pradesh. I humbly request Brajesh Pathak ji, please, आपकी presentation, आपका address. इंडो अमेरिकन आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है. इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अवसर पर मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूंगा मुकेश जी का कि उन्होंने हम सबको एक अवसर प्रदान किया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि एक दूसरे से बात करने का, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इन्होंने कोविड-19 में लीगल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस पर रखा है। हमारे साथ प्रमुख रूप से उपस्थित हैं आदरणीय जस्टिस अमरनाथ वर्मा जी, आदरणीय जस्टिस देवी प्रसाद सिंह जी, हमारे मित्र बड़े भाई, हमारे साथ सांसद रहे, एडवोकेट जनरल रहे आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी, मिस्टर अनुराग गुप्ता जी, राधिका गुप्ता जी, और संचालन कर रहे व्यवस्थित ढंग से डॉक्टर ललित भसीन जी और आदरणीय मुकुल शाह जी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप लोगों ने चुना है। हमें जहां तक पता है कि दुनिया में कभी ये ऊंचा नहीं गया था या सुना भी नहीं गया था। हमारे बाबा लोग बताते थे कि ऐसी कोई महामारी आई थी कि पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई थी 1918 के आसपास, लेकिन पुनः हमको इस सबसे रूबरू होना पड़ा और अंग्रेजों ने जो एक्ट बनाया था हो नहीं रहा था, याद में पहली बार अपने देश में लागू हुआ एपेडमिक एक्ट। उस एक्ट के कार्यविधि में जिलाधिकारी बोल रहे हैं, आवाज मिल रही है क्या? हाँ जी, आ रही है जनाब। अधिकारियों को सबसे ज्यादा इसमें अब हमारी आवाज आ रही है? आपकी आवाज की इस वक्त जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं वैसे हमने कहा आवाज अब आ रही है, आवाज आ रही है, अभी हम मिनिस्टर साहब को सुन रहे हैं, ठीक है, प्लीज म्यूट हो जाइए। ठीक है। हम रूबरू हुए और हमने जाना कि किस ढंग से एक्ट काम करता है और किन विशेष परिस्थितियों में इसको थोड़ा सा नीचे करो, क्या इनको क्यों बार-बार करो थोड़ा। Sir, we are having a keynote from the Honorable Minister. We'll have your turn after that, please. Yes. ब्रजेश भैया बोलिए, आप आवाज आ रही है। तो महामारी के दौरान लाखों की संख्या में मजदूर जो उत्तर प्रदेश के निवासी से और देश के दूसरे हिस्सों में काम कर रहे थे, तो वापस आए और किन परिस्थितियों में आए, पूरी दुनिया ने उनको देखा। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी दुनिया में ऐसा हो कि 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 700 किलोमीटर किसी भी व्यक्ति में विल पावर हो, वो पैदल घर की ओर चल देगा और पूरे परिवार के साथ चल देगा। पर पूरे पैदल परिवार के साथ चले, मैं उनको सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। लेकिन हमारी सरकार ने जो भी व्यवस्था कर सकती थी, जब पहली बार रात में नोएडा में लोग इकट्ठा हुए, रात में ही 1100 बसेज हम लोगों ने लगाया। जैसा कि विजय बहादुर जी ने बताया कि कोटा हमने बच्चों को लेकर के आए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि कोई भी व्यक्ति यदि घर वापस आना चाहता है तो उसके लिए हम इंतजाम करेंगे। 1200 से अधिक ट्रेन को हम लोगों ने चला करके और उत्तर प्रदेश के निवासियों को हम उनको घर वापसी का इंतजाम किए। अब सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने इतनी बड़ी संख्या में जो माइग्रेंट लेबर है उसको हमें व्यवस्थित ढंग से काम देने का था। तो हमारी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है हमारी एक योजना है, उसके तहत लोगों को जोड़ करके, कुटीर उद्योगों के साथ जोड़ करके और मनरेगा के साथ जोड़ करके लोगों को रोजगार प्रदान करने का काम लगातार कर रही है। सबसे पहले हमने 50 लाख से अधिक लोगों को मनरेगा के माध्यम से जोड़ा है। आज आपने देखा होगा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया जिसमें हमने एक योजना तय की कि 1 करोड़ से अधिक लोगों को हम रोजगार प्रदान करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस योजना से जुड़े, उन्होंने इसका विधिवत उद्घाटन किया। हमारी सरकार की योजना है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश से बाहर न जाकर के उत्तर प्रदेश में उनकी डिस्ट्रिक्ट की सीमा में, उनकी गांव की सीमा में ही रोजगार हम प्रदान कर सके प्राथमिकता के आधार पर। जहां तक हमारे व्यवसायियों को सवाल है, मैं अपने मुकेश जी को, उनकी पूरी टीम को और जो भी हमें सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं, मैं पूरी तरह से आश्वासन देता हूं, जो भी हमारे उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये काल जो है ये सोचा नहीं गया तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमारी केंद्र की सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। विभिन्न स्टेशन में कुटीर उद्योगों से लेकर बड़े लोगों तक लोन देने का इंतजाम किया है और उसके साथ ऋण में वसूली पर भी हम लोगों ने रोक लगाई है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नए कुटीर उद्योग है एसएमईज के माध्यम से उनको भी प्रमोट करने की योजना हमारी सरकार की है। बैंक से लगातार हम संपर्क में हैं। हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है।
हर चुनौती से हम निपटेंगे। लेकिन मैं फिर पुनः अपने व्यवसायियों को भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। इस मुसीबत के काल में सब लोगों ने मन से प्रदेश की जनता के साथ खड़े होकर के देश की जनता के साथ काम किया है। हम लोग शीघ्र ही इस अव्यवस्था से कुव्यवस्था से उभरेंगे। सबसे संतोषजनक पहलू यह है, जितनी बड़ी संख्या में हमारे पास कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। आज लखनऊ में 300 से अधिक मरीज हैं, लेकिन संतोष की बात यह है कि 99.99% लोग ठीक होकर के घर जा रहे हैं। केवल वो लोग जो पहले से बीमार थे, उनको किडनी प्रॉब्लम थी, हार्ट प्रॉब्लम थी, या उनके कुछ ऐसी असाध्य रोग था, उन्हीं को क्षति पहुंच रही है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो दवाई या उन लोगों लापरवाही के कारण हुआ है, चिकित्सीय व्यवस्था तत्काल उपलब्ध न होने के कारण हुआ है। आप दिल्ली जैसे स्टेट में देख रहे हैं, चिकित्सीय व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा है। लेकिन हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस बेहतर ढंग से प्रबंधन किया है, हमारे पास आरक्षित बेड आज भी हजारों की संख्या में है। हमने जांच की संख्या बढ़ाई है। हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जहाज को भेज करके गोवा से इंस्ट्रूमेंट मंगा करके तत्काल जांच की भी व्यवस्था की है। मैं आप सब लोगों के सहयोग की भावना से आपसे अपील करता हूं कि हमारी सरकार को इस मुसीबत के समय में आप अपना आशीर्वाद दें, हमारी मदद करें, और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। जो भी, जैसे हमारी बहन राधिका जी ने पहले जो पावर परचेज एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या इंडस्ट्रियल एक्ट के बारे में जो चर्चाएं की है, मैं उस बारे में कानूनी रूप से आपको इस बात के लिए आश्वासन देता हूं कि हमारी सरकार पहली बार है कि हमने इंडस्ट्रियल अदालतें अलग से बनाई। आप सब जानते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत पहले जो सिविल अदालतें थी, यही अदालतें निर्णय करती थी इंडस्ट्रियल जो हमारे विवाद होते थे उनका, जो कॉन्ट्रैक्ट के विवाद होते थे उनका। उत्तर प्रदेश सरकार ने इंडस्ट्रियल अदालतों का गठन कर दिया है और 13 कोर्ट हमारे अच्छी तरह से काम करने लगे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कोई भी इंडस्ट्रियल सिस्टम बिल्कुल भी इस कोविड के दौरान परेशान न हो, हम उनके साथ खड़े हैं। यदि कोई भी बात ऐसी है जिसको आप चाहते हैं कि हमारे इन्वॉल्वमेंट से दुरुस्त हो सकती है, तो मैं मुकेश जी से आग्रह करूंगा कि मुझे अवश्य सूचित करें। हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है, और जब दोनों भाई, सरकार और उद्यमी और जनमानस के लोग एक साथ खड़े होकर काम करेंगे, तो उत्तर प्रदेश अवश्य तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होगा। मुकेश जी ने मुझे अवसर प्रदान किया, मैं अपनी बात रख सकूं, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूंगा भसीन साहब का, जिन्होंने बेहतर ढंग से विषय को रखते हुए वेबिनार का संचालन किया है। क्योंकि मुझे 5 बजे कार्यक्रम में जाना है, पहले से तय कार्यक्रम है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहते हुए जाना चाहूंगा। मैंने मुकेश जी से पहले ही आग्रह कर लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश पाठक जी। आपने जो पॉइंट रेस किए हैं उससे बहुत हमको मॉरल सपोर्ट मिलती है। आपने बोला है कि सरकार तो कितना कुछ कर रही है, पर एक हमारे भी सहयोग की जरूरत है आपको। तो जब तक दोनों मिल के काम नहीं करेंगे, तब तक ये डिफिकल्ट जो टाइम है, इस वक्त इतना मुश्किल वक्त आ रहा है जिसको हम फेस कर रहे हैं, तो आपकी सरकार ने बहुत कुछ किया है। खासतौर पे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, घर वापसी का जो आपका प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, और सबके लिए एक रोल मॉडल है, वो हर एक को फॉलो करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, धन्यवाद। With this now I'll request Honorable Justice Verma, our guest of honor, to please give his address. Honorable Justice Verma. All right, can you hear me now? Yes, we can hear you, sir. All right, hello everybody, how are you? Fine, thank you. So now, so far as the topics which have been enumerated for discussion, topic regarding bankruptcy and the other which was being dealt by Mr. Anurag Gupta, since they have already been dealt with, and first speaker, that is Radhika Gupta, has very elaborately and nicely held and dealt with the topic assigned to her. Therefore, on these two topics, I'm not going to address. The remaining part that is being listed for discussion, I'll confine myself to that only. Now, dear panelists, so far COVID-19 is concerned,
Apart from heavy toll that it has taken on human life worldwide, the global economy has also been shattered. Activities in industrial field have come to a virtual standstill. Being short of means to survive, both skilled and unskilled labor started migrating to their native places by whatever means available in order to save themselves from hunger, starvation, and pandemic. This situation was so grim and pathetic to see thousands of people even walking through hundreds of miles to cover their destination with large numbers, even succumbing to heat, hunger, thirst, and accidents. More than 3 months have elapsed since the pandemic started. Outbreak of the pandemic, still things do not seem to have normalized. And rather every day, number of corona patients are increasing with scant hope of revival. Scientists and medical professionals all over the world are working day and night for an effective remedy to defeat the deadly virus, but have so far not succeeded in their efforts to prevent the spread of the disease. However, hope has not been lost. Scientists one day will definitely come out with remedial measures. Now, so far as the economy of the country is concerned, the pandemic has disrupted the economies and business with closure of several manufacturing units and supply chain worldwide. The disruption is forcing managements of organizations worldwide to confront as to how business should respond during such a crisis. COVID-19 pandemic has fundamentally altered the entire process of business. The WHO declared COVID-19 as pandemic in March 2020. The outbreak and rapid spread of COVID-19 has sent shock waves across the global markets. It has disrupted supply chains, leading to closure of several manufacturing facilities globally. Serious disruption in air and sea traffic and closure of vital routes. This in turn has led to collapse of stock markets around the world, leading to loss of billions of dollars. A combination of these factors has led to decline to overall volume of global economy towards possible recession. It has forced the management across the globe to confront on how to conduct business during global health crisis. The government of India and state governments have already issued several advisories relating to COVID-19 pandemic. In March 20, the government of India issued an order under the Disaster Management Act, delegating powers to Secretary, Ministry of Health and Family Welfare to examine the preparedness and containment of COVID-19 and ancillary connected matters. Ministry of Health and Family Welfare advised that mass gatherings may be avoided or possibly postponed till the disease spread is contained. In case such mass gatherings are organized, states may take action to guide the organizations of communication material already sent in order to avoid any severe acute respiratory illness and influenza-like illness. All existing visas, excepting diplomatic and official international visas, all have been suspended. Card holders in India can stay as long as they want, provided they get the permission to
standby. In response to global outbreak of COVID-19, government in many countries have issued emergency legislation to mitigate the impact of pandemic on combating day-to-day operations. Now, the greatest, as the impact is on the business, overall business, factories have been closed down, every activity has come to a standstill. It has also played a great havoc on legal profession. The legal profession has also been badly hit. The legal profession is no exception. Communication with a lawyer by the client is a necessary ingredient in legal profession. Unless face-to-face consultation between the client and lawyer is made, effective legal practice cannot be materialized. This, however, is not possible on the face of corona pandemic. The measures which are now being adopted are through phone calls, emails, video conferencing, and other devices. The process can be useful and be utilized where chambers of lawyers are equipped with all modern facilities. But in case of junior lawyers who have no such facilities, they are the people or group of people who face great difficulties. For past 3 months, they have not been able to make any such earnings or any earning whatsoever so as to meet their day-to-day expenses. Also not ignoring the fact that there are several other exigencies and liabilities in the shape of house loans, vehicle loans, and other miscellaneous expenses. Moreover, the clients who are based in remote areas and have some emergent matters are also not able to approach their counsels for redressal of their grievances on account of the lockdown and restricted movement. Courts also remain closed for more than 3 months, taking up only urgent matters, that too only by video conferencing. Law firms are also closed. They have not been able to deal with the client in any manner. The important matters which are required to be taken, they have also not been able to deal with it. The young lawyers who are working in the law firms, they are also in requirement of money, but they are not being able to get through it. So far as these lawyers are concerned, it is they who are badly hit. Therefore, unless the court opens and the legal system again starts working, there is at the moment scant hope for any activity, legal activity in the legal field. Now, so far as the question as to whether the present Indian legal framework, which is in existence, is it sufficient to deal with the pandemic, or any other law is required to be, particularly in respect of this aspect? Now, it can be said that our present legal system, it is good enough to meet the situation which is existing and which has arisen on account of this pandemic. The enactments such as Disaster Management Act and Epidemic Disease Act, they are themselves, though they are very old acts, but still they are sufficient to deal with the present situation. Government of India and state government have issued various advisories, guidelines, and directives issued by the other states also, to meet out the exigencies and requirements. If need be, if further need is required, then suitable amendments in the Principal Act can be made, and then the situation can be. Therefore, so far as I am concerned, in my opinion, no further legislation on this subject primarily appears to be required.
and the pandemic can very well be managed within the four corners of Indian legal framework. Now, so far as the coronavirus is concerned, appears to stay for some time, and judiciary itself needs to cope up with it. Normal functioning, or rather now normal functioning of courts, is going to take its own time. However, tough time is there. People may have to learn the ability to change. And unless we take up all these things and we adopt all these things, the situation would not improve. And we also have to have patience amongst all of us that to defeat this disease, we have to act very wisely. Thank you. Thank you. Thank you, Honorable Justice Verma, for your presentation and your comments that the present law is adequate to deal with any type of situation and no new laws are required. I entirely agree with you, because I'm not in favor of multiplying the laws. But we already have too many laws and too many regulators and all that. I think the Disaster Management Act and the Epidemic Act, you see, are very much there. Now I request our other very eminent speaker, that is guest of honor, Honorable Justice Devi Prasad Singh Ji, the former judge of the High Court of Allahabad, to please make his presentation. Over to you, Honorable Justice Devi Prasad Singh Ji. Thank you. Good afternoon. I am touching slightly different issue. By the time we all know, China informed the world regarding COVID-19 originated from its Wuhan province. It is spread in USA and other Western nations of the world, including India. It ensured its presence in different parts of the world. Chinese, always remember, Chinese never do anything without premeditation and planning. They speak less but do more with long-term planning. They speak less but do more with long-term planning. The circumstances impress the mind of conscious people, whether it is beginning of a silent biological warfare, since its effect is enormous across the world. Without urgent socio-economic development and responses, global suffering will escalate, jeopardizing the lives and livelihood for years to come. Immediate development responses in this crisis must be undertaken with an eye to the future. Development trajectories in the long term will be affected by choices countries make now and the support they receive. The United Nations make now and support. The United Nations has mobilized the full capacity of UN system through its 131 country teams, serving 162 countries and territories in support of gestal authorities in developing public health, preparedness, and responses planned to COVID-19. And the coronavirus pandemic, several countries across the world resorted to lockdown to flatten the curve of the infection. This lockdown means confining millions of citizens to their homes, shutting down business, and seizing almost all economic activity. According to International Monetary Fund, the global economy is expected to shrink by 3% in 2020, the steepest slowdown since Great Depression of 1930. Out of 20 economies in 1980 world, 17 are still in the list. 10 economies add up to 66% of the world economy. 173 countries contribute less than 1/4 to the world economy. In USA, 2.43 million infected with death of 1,24,000 till date. The size of US economy was 20.5 trillion in 2018
in nominal term and is expected to reach 22.32 trillion in 2020. The US is often dubbed as an economic superpower. That is because the economy constitutes almost a quarter of global economy, backed by advanced infrastructure, technology, and an abundance of natural resources. Whereas India is the fastest growing $1 trillion economy in the world and fifth largest overall with a nominal GDP of 2.94 trillion. India has become the fifth largest economy in 2019, overtaking the United Kingdom and France. The country ranks third when GDP is compared in terms of purchasing power parity at 11.33 trillion. India, which grew to 6.8% in fixed year 2018, is forecast to slightly clock at 5.4% growth in 2021, being affected by COVID-19. However, India and China are only two economies in the world which are not projected to shrink into 2020, subject to further assessment. So far as Uttar Pradesh is concerned, Chief Minister Yogi Adityanath led Uttar Pradesh government presented a budget of 5,12,860 crore for financial year 2021 in the State Assembly. The budget, the size of which is 33,159 crore, more than the last year's budget, was provisioned with worth 10,967 crore for new schemes. The budget includes outstanding public welfare schemes. The current financial year 2021 has been adversely affected by COVID-19 pandemic, which has impacted the majority of countries in the world across the continent. The pandemic has cast its shadow across the various economic activities with dislocation in global production, supply chains, and trade. However, the UP budget seems to require further long-term investment and planning to give impetus to corporate and small-scale industries, cotton, handloom, and alike avenues provide and generate long-term employment to the people of the state. Today is a very auspicious day, a memorable day when Prime Minister and the Chief Minister of UP launched a scheme to generate employment for 1,25 lakh citizens. It was not 1 crore, it is 1,25 lakhs according to newspaper report. Good thing is, in pursuant to avenues and relaxation provided by Government of India as declared by Finance Minister Sitaraman, the RBI had issued a revised ECB framework notification which sought to refurbish the existing regime on ECBs. The move witnessed a merger of various routes for raising ECBs and also substantially relaxed the provision for eligible borrowers and recognized lenders. India bid to expedite the corporate insolvency resolution process and to enhance the efficacy and accountability of India on the ease of doing the business front. The RBI, in consultation with the government, has decided to relax the restriction on ECB. India's corporate sector debt has become a cause for concern as the mounting debt of major companies are at an unsustainable level. In recent years, some of the companies have been entangled in the debt trap as their debt payment requirements have grown at a higher pace compared to their sales and profit, leading to the inability to service debt. In the last decade or so, external commercial borrowing, ECB, have emerged as major source of fund for the corporate sector. The Reserve Bank of India issued notification on 7 February 2019 to relax the restriction on ECB. This comes in the wake of observation made by Allahabad High Court and Supreme Court in their judgments
that the primary objective of Insolvency and Bankruptcy Code 2016 was time-bound resolution of the stud asset of a corporate debtor, and that all possible efforts shall be made to preserve the corporate existence of a corporate debtor on a ongoing concern basis. NCLAT also taken a forward step wherein pre-moratorium period was imposed on the corporate debtor under section 14 of the code before commencement of CIRP to safeguard the interest of the creditors from unnecessary delay in the initiation of CIRP and its subsequent misuse by the debtors who tried to siphon off funds by cashing on their assets. However, now the legal position on this issue stands in favor of vulnerable creditors by ensuring that an interim moratorium be imposed in cases where there is direct threat to the interest of creditors. And there is one suggestion: government has provided for deferment of loan on account of COVID-19. But by deferment of payment of installment is not so helpful because this accumulates the interest, rather it makes compound interest. So it will be appropriate that in case government gives some relaxation in payment of interest or the debt taken by the citizen. Certain problem which may crop up in insurance sector on account of COVID death is that in defense may be taken by the insurance companies that they may not liable to pay insured amount on the ground that pandemic of COVID is an act of God. This is common defense which all lawyers will take in future. Act of God. The act of God has been interpreted and defined by the Divisional Bench of Allahabad at Lucknow, presided by me, as well as by Supreme Court of India in number of cases in the accidental matter. However, the law on the subject, like pandemic of COVID, is required to be clarified by legislative enactment. So far as USA is concerned, it may not suffer from severe problem in due course of time, but India, a developing country, requires a long-term planning on account of defense expenditure. There is no time. On account of defense expenditure, surrounded by two-side enemies like China and Pakistan, who have been continuously and aggressively encroaching our borders, giving shelter to terrorists, breaking the peace of Southeast Asia, broadly the entire world. Central and state governments should take appropriate steps to strengthen the economy by appropriate planning so that India may cope up with the alarming situation eminent from problem created by a rogue country like Pakistan and the expansionists like China. Undoubtedly, I will request Honorable Justice. I am concluding. Undoubtedly, assistance from West, including USA, we require for security and development of India. While parting from my exposition, there is a request. Now, henceforth, since we are at tag with China, the Chinese app may not be used in future because this will enrich our money go to China. Thank you. Thank you very much, Honorable Justice Devi Prasad Singh Ji, for your very enlightened address. I would request that it appears you have a written text, you see, if that could be shared. I will request Mr. Mukesh Singh to please take the written text from both the honorable judges and please have it sent to us so that we can circulate their views, to the participants and members. Thank you very much. And now, when we move on to any questions, Mr. Anurag Gupta, I'll ask you some question. What do you think is the condition, and please answer very briefly, the impact of this coronavirus and the lockdown on the legal profession, particularly in the state of Uttar Pradesh, and whether any steps are required to be taken?
It is disastrous. Are you able to hear me? Yes, yes, we are able to hear you. So the legal profession. Hello. Yes, sir. Are you able to hear me? Are you able to hear me? Hello. Yeah, we are able to hear you intermittently. Sir, the condition is very disastrous in Agra, particularly in the district courts. There is no monetary help to any of the advocates over here, barring the assistance given by we lawyers to our junior staff or to the staff of the court. There is no monetary help from the state government. Are you still there? Or? There is absolutely no help from the state government in this aspect. There are many lawyers who are barely able to make their both ends meet. Now the courts are closed. There is no source of their income. They are at the verge of collapsing with their families. To add a line more, it is the footfall of the clients which step into a district court when the courts get reopened. We have no precautions. We have no facilities for covering up all these. If a person who's affected and infected by corona steps into our chambers, the conditions and subsequent events will be absolutely disastrous. Okay, thank you. There has to be a preventive measure and precautions adopted by the state government for the district court lawyers. I'm basically speaking about the district courts in Agra, in UP. Yeah, thank you very much, Mr. Gupta. Now we have the final question to Radhika Gupta. Radhika, are you there? Yes, yes, I'm there. Okay. Radhika, please tell us what has been the impact of coronavirus and the lockdowns so far as the young lawyers, the emerging law firms, they are concerned. And how do you see the situation in the next 6 months? Radhika Gupta. Thank you. Thank you for the question. The other day I read a headlines which said the 2,000 crore legal industry has been hit. And I think it couldn't be more apt than this, because the legal profession has been as badly hit as any other sector of the economy. And young lawyers particularly, because personally having known certain situations of young lawyers who are not able to meet their ends meet. So I think with the courts closing, as Justice Verma had extensively dealt with, that, you know, the courts closing, only virtual hearings are taking place, and the lawyers, especially the young ones, are not getting any opportunity. Personally speaking, I would get opportunities to appear before courts myself, but with the last 3 months, there are very fewer cases, and therefore the junior lawyers don't get a chance to appear at all. So I also had a few suggestions. I mean, given that lawyers contribute major revenue to the government and they have been paying huge taxes also, it is a need that, apart from the bar councils and associations which are helping the lawyers, even the government should take certain steps, like because there's a need for a virtual hearing, and I see for the next 6 months also that I don't think the situation is going to improve, and the physical courts may not start for the next 3 to 6 months. So therefore the government should help in a way that the lawyers are given subsidy or deductions, that they are able to set up that virtual hearing. And probably even the courts, after that provision where more lawyers are able to connect virtually, thereafter the courts also start hearing more. I understand that there are a lot of aspects of the court that cannot be done virtually, especially things like cross-examination, I feel. But at least a few more cases coming up and lawyers getting to appear, that would help them meet the ends in this situation. Thank you. Thank you very much. That was a very appropriate answer. And now over to you, Mr. Mukesh Singh. Thank you, Lalit sir.
और जैसा आपने पॉइंट आउट किया है, जैसा आपने रिक्वेस्ट किया है, आई विल रिक्वेस्ट जस्टिस अमरनाथ वर्मा जी एंड जस्टिस देवी प्रसाद जी, जो उनके स्पीचेस थे, राइटअप्स थे, वो मैं आप लोगों से लेकर के डॉक्टर भसीन मैं आपको भेज दूंगा। और सिंस आई एम हियर फॉर वोट ऑफ थैंक्स, तो मैं सबसे पहले ऑनरेबल मिनिस्टर जो जा चुके हैं, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि माननीय मंत्री जी का पॉलिटिकल और लॉ, वो खुद भी लॉ स्टूडेंट रहे हैं, तो उनका काफी क्लोजली इससे है, और उन्होंने उनसे जितने भी उत्तर प्रदेश के बिजनेसमैन हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वो ऑनरेबल मिनिस्टर से काफी क्लोजली जुड़े हुए हैं। तो मिनिस्टर साहब यहाँ जा चुके हैं, लेकिन मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो इस दोनों पहलुओं को समझते हैं कि एक बिजनेसमैन की, कॉर्पोरेट्स की क्या दिक्कत है, और किस तरीके से लॉ में कंप्लायंसेस, किस तरीके से इजी कंप्लायंसेस करना गवर्नमेंट की जरूरत है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर कमिटमेंट दिया कि वो बिजनेसमैन के साथ है, गवर्नमेंट और बिजनेसमैन साथ साथ है। तो ये मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू जस्टिस देवी प्रसाद जी एंड जस्टिस अमरनाथ वर्मा जी। बहुत ही वैल्यूएबल समय सर आप लोगों का। और जस्टिस अमरनाथ वर्मा जी ने वेरियस डिस्ट्रप्शंस की, सप्लाई चेन की बात की उन्होंने यहाँ पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गवर्नमेंट की जितनी भी एडवाइजरीज है उनकी बात को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से रखा है। जस्टिस देवी प्रसाद जी ने जितने भी कंप्लायंसेस हैं, हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे, उनको बहुत अच्छे तरीके से रखा। सर मैं आप दोनों का बहुत बहुत इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स NIC की तरफ से, डॉक्टर भसीन की तरफ से, मैं आपका दोनों लोगों का सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। श्री विजय बहादुर सिंह साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, बहुत बड़े लॉयर हैं उत्तर प्रदेश के, और उनका भी कॉर्पोरेट से बहुत अच्छा लिंक है। मैं जानता हूं वो बहुत सारे बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं जिसके वो लॉयर हैं। तो मैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आप बड़े भाई की तरह हैं, और उत्तर प्रदेश में आपका और ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़ा नाम है। तो शुक्रिया सर इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स NIC के इस वेबिनार में शामिल होने के लिए। मैं अपने साथी मुकुल शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर राधिका, अनुराग गुप्ता जी एंड राधिका गुप्ता जी। राधिका जी आपने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को लेकर करके अपने ऑब्जर्वेशन रखे। लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन में आपने ई कोड को लेकर के जो वेरियस चैलेंजेस है उनकी बात रखी। मैं आपका भी बहुत ही ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन था आपका। अनुराग जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, आपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे। और लास्टली डॉक्टर भसीन, एज ऑलवेज यू हैव बीन ग्रेट मॉडरेटर सर। आपका हमेशा से एक बहुत अच्छा संचालन रहता है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी लीडरशिप में जो बेस्ट कनेक्ट हो सकता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सेक्रेटरिएट, कशिश जी, सोनिया जी एंड नीलू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विदाउट सेक्रेटरिएट टीम दिस वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू डॉक्टर ललित भसीन फॉर क्लोजिंग रिमार्क्स। थैंक यू वेरी मच। बस वोट ऑफ थैंक्स के बाद कोई क्लोजिंग रिमार्क्स नहीं है, बस आपने सबका धन्यवाद कर दिया, फिर ये बिल्कुल ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड होप टू again engage in some active interaction. Thank you. All the best. Please be safe. Thank you sir. Thank you Honorable Justice Amarnath Verma ji. Thank you Devi Prasad ji. Thank you Vijay Bahadur Singh साहब।